Good morning, students. Let's start with our next elements of NEP, New Economic Policy. We had already discussed the first one, that is liberalization. Now, moving with the second one, privatization. Before discussing privatization, we have to discuss a very important concept, that is disinvestment. What is disinvestment? Disinvestment is exactly opposite to investment, in which in investments we buy up the assets in an organization or owns the assets in an organization, or which claims the ownership, okay, or increases the ownership in an organization. Whereas disinvestment inversely reduces the ownership in an organization, or you can say, when we sell the assets or ownership in an organization, the process is called disinvestments. Okay, so this is the action of selling or liquidating the assets or ownership of an organization. Okay, so this process disowns the assets of a person in an organization or reduces the ownership in an organization. Okay, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम अपनी ऑनरशिप जो है, मालिकाना हक जो है, वो ख़त्म कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब अपना पैसा निकाल रहे हैं. ओके, बाय सेलिंग द एसेट्स और स्टेक होल्डिंग. वी आर सेलिंग आर स्टेक होल्डिंग ऑन दैट ऑर्गेनाइजेशन, और वी आर सेलिंग आर एसेट्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स वी आर रिड्यूसिंग आर ऑनरशिप और आर स्टेक होल्डिंग. हम अपनी दावेदारी या हिस्सेदारी वहाँ से हटा रहे हैं. Okay, that was all happened in the process of privatization. That is also known as disinvestment in PSUs. Okay, PSUs is the term used for public sector undertakings, the organizations or the enterprises which were owned and controlled by the government. Okay, so privatization started in 1991, in which the government started disinvesting its major industries to the private sector. That means government started selling its ownership or assets to the private sector largely or on a wide basis. So privatization is the process of selling the stakeholding of government to the private sector. Okay, that means the government is selling its shareholding or stakeholding, or you can say the government is selling its assets in PSUs to the प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट पीएसयूज में जो एसेट्स थे, जो संपत्ति थी अपनी, उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच रही थी. दैट मीन्स द गवर्नमेंट started disowning the assets of PSUs. Okay. Now the question is, why was the need for privatization in 1991? The need for privatization or disowning the public sector undertakings was felt with the mounting up losses of the public sector undertakings, or when the burden of the losses of public sector undertakings started increasing on the treasury of the government. That's why the government decided to privatize these industries. Okay, as we know that the public sector industries work with the objective of social welfare, and they do not prioritize profit motive. As a result, they did not introduce innovation in their production technology or in their methods and technique. That's why their products or their market share started getting reduced. As a result, the industries which were under public sector or which were under the control of government started bearing losses. As a result, the government, in order to reduce its burden or economic burden, started disowning such enterprises which were going into losses, or you can say the government started privatizing those industries which were going into losses. The first cause or the reason for privatization was its objective, that was social welfare. Government wanted to develop the economy with the objective of social welfare, not with the objective of profit motive. That's why till 1990, or in its economic policies till 1990, government given a priority to the public sector and undertakings over प्राइवेट सेक्टर. ओके, गवर्नमेंट ने 1990 तक की इकोनॉमिक पॉलिसीज में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को या अंडरटेकिंग्स को ही एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया, प्राइवेट सेक्टर को नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो, लेकिन सोशल जस्टिस के या सोशल वेलफेयर के साथ हो. ओके. Second reason was lack of competition. As we have discussed that the policies of 1950 to 51 to 1990 emphasized the role of public sector.
and this results into, or this shows, or this reveals that the public sector enterprises or undertakings were highly protected by the competition of private sector, because the major areas of production were reserved for public sector, and the private sector industries were forced to take, or were obligated to take, or were bounded to take license to set up their industries or to commence their business. As a result, you can say the private sector was fully controlled by the government and public sector enterprises were protected. So these public sector undertakings did not face any competition till 1990. As a result, they did not strive for their growth or improvement in their technology. As a result, their market share started decline. Again, we can say, due to the control of government, PSUs engaged in such some activities which were highly considered as unfair. For example, corruption, pilferage, and leakages. Pilferage, you can say, that is a type of theft, चोरी की तरह ही इसको यूज़ किया जाता है. तो इस तरह की अनफेयर एक्टिविटीज़ जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में स्कैम्स के रूप में, जो आज के टाइम में हम टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, स्कैम्स, बहुत सारे इकोनॉमिक स्कैम्स जो थे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में होने लगे अंडर पॉलिटिकल पार्टीज़. तो इन वजहों से भी जो है पब्लिक सेक्टर जो है काफ़ी लॉसेस में आने लगी एंड दे प्रूव्ड सोशल डेड वेट. एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट we need to privatize these industries. So these were the causes or the reasons which resulted into privatization of the public sector undertakings or enterprises. Now, the next concept is the merits and demerits of privatization. What were the gains or benefits did the economy observe through the process of privatization? So first of all, moving towards the merits, the first one is high efficiency. Private sector, which were working for profit motive or self-interest, started working with their full efficiency because they do want to earn profits. Or those public sector undertakings which were going into losses in the time period or tenure of the economic policies till 1990, now they were in the hands of private sector, and private sector would not therefore bear the losses. The private sector work for, or private sector only wanted profits, not as their prime objective or their priority importance. That's why the private entrepreneurs started with their full efficiency and effectiveness to convert those social deadweights into profit making enterprises or profit making concerns. That's why we can say that due to this objective of profit making, private entrepreneurs converted the loss making industries into profit making industries. The next one is modernization. As privatization started gearing up, the competition was increased in the market. जैसे ही प्राइवेटाइजेशन इंट्रोडक्शन में आया, प्राइवेट सेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, तो जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उनका नंबर इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि पहले पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की वजह से जो थे प्राइवेट सेक्टर को लिमिटेड कर रखा था या फिर कंट्रोल था गवर्नमेंट का. दैट मीन्स दे हैड टू टेक लाइसेंस. ओके, दे वर रेस्ट्रिक्टेड अप टू अ सर्टेन लिमिट. नाउ विद द प्राइवेटाइजेशन, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, जो पहले प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइजेस थी वो तो एग्जिस्टिंग थी ही, अब कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी बेच दिया गया था प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट इंडस्ट्रीज को. दैट्स वाई द नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वर स्टार्टेड इंक्रीजिंग. एज अ रिजल्ट, कॉम्पिटिशन इन द मार्केट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, एंड कॉम्पिटिशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन improvement and innovative technologies. That's why the private sector enterprises started introducing innovation in the production techniques. This resulted into modernization in production. The next one is diversification. As the private sector, we have already discussed that private sector started using their full efficiency to convert the enterprises into profits, or to increase their profits. They started working with their higher efficiency or fuller efficiency. As a result, these enterprises were earning or generating high profits, and these profits were used for the एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ दीज एंटरप्राइजेस. मीन्स जब कंपनीज या जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज थी उन्होंने काम करना शुरू किया,
तो वो फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर रही थी, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा हुए और इन प्रॉफिट्स को यूज़ किया गया अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए या फिर डाइवर्सिफाई करने के लिए. डाइवर्सिफिकेशन हेयर मीन्स द इंडस्ट्री विच वर प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट now were not confined to that product only. When or as and when these industries were earning higher profits, they started investing these profits in other areas also or other products also. That means कोई इंडस्ट्री जो पहले किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस कर रही थी, अब उस इंडस्ट्री को अगर प्रॉफिट हो रहा था तो उस प्रॉफिट को वो जो है दूसरे एरियाज में इन्वेस्ट कर रही थी. मीन्स कि अब वो इंडस्ट्री सिर्फ एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से, एक ही तरह का सिंगल काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने तक ही लिमिटेड नहीं थी, कन्फाइंड नहीं थी. नाउ द इंडस्ट्री और दैट एंटरप्राइज स्टार्टेड producing different kinds of products by establishing different प्रोडक्शन यूनिट्स. फॉर एग्जांपल अगर प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स बना रही है कोई कंपनी और उससे या एंटरप्राइज, उसको वहाँ से काफ़ी प्रॉफिट होता है, तो वो कोई दूसरा प्रोडक्ट लाइक कोई मेटल प्रोडक्ट जो है वो भी प्रोड्यूस करने लग जाएगी कोई दूसरी यूनिट सेटअप करके. दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन. फॉर एग्जांपल कोई आईटी कंपनी है, अब वो बीपीओ में भी आ गई है, कंसल्टेंसी या कंसल्टिंग फर्म या एजेंसी उसने खोल ली है, तो दैट मीन्स ये डाइवर्सिफिकेशन है. और ये हुआ कैसे पॉसिबल? जब कंपनीज या एंटरप्राइजेस प्रॉफिट्स अर्न करने लगी तो इन प्रॉफिट्स को उन्होंने अलग अलग जगहों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया एंड दे वर इमर्ज्ड विद वेरियस न्यू production units. The next one is consumer supremacy. The private sector, which were working for profit motive, they had realized that they can only come up as a power, or they can only increase their profits when they produced goods or when they start produced goods as and according to the consumers. That means they started giving priority or supremacy to the consumer's interest over their own interest. That means उन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस ने रियलाइज़ किया अगर हमें प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं, मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, तो हमें कंज्यूमर्स की चॉइस या कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे. दैट्स वाई दे स्टार्टेड गिविंग due importance to the consumer's interest over their own interest. As a result, the consumers had wider or greater choices of products in the markets. So these were the gains or the benefits which were observed or experienced by the economy as well as the consumers in the country. Now, there were the dark side of privatization, which is known as demerits. See, first one is exploitation of resources. As we know that private sector was working for profit motive, so to increase their profit share, the private sector started exploiting the resources of the country, and this exploitation or these exploitation or exploitative activities have turned up the social welfare as a concept of theory. That means these industries were not thinking about the objective of the government, that was the growth with social justice. They were just mere means prioritizing their प्रॉफिट मोटिव और देयर सेल्फ इंटरेस्ट. मीन्स जो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस थी अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए जो कंट्री के रिसोर्सेज थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे प्राइवेट सेक्टर की वजह से कंपटीशन इंक्रीज हुआ, तो उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज थे कंट्री के उनका डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि उन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ ने अपने फ़ायदे के लिए उन रिसोर्सेज को यूज़ करना स्टार्ट किया. एंड जो सोशल इक्वालिटी थी, सोशल वेलफेयर था, सोशल जस्टिस था, कुछ भी हम कह सकते हैं, वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बन के रह गया था, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहा था. The next one is increasing the gap of poor and rich, or you can say the social inequality was promoted by the privatization. Okay, social inequality means the gap between poor and rich were started increasing due to privatization, because as we know that the private sector was working for profit motive, and they will only get the profits or they will earn higher profits only with the help of the rich sections or the well off sections of the society. That's why they started producing variety of goods or various goods for those or for that section who have the means to buy. मतलब
प्राइवेट सेक्टर उनके लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करता था, या ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर ने करना स्टार्ट किया जो कि रिच सेक्शंस को फ़ायदा दे रहे थे या फिर रिच सेक्शंस के लिए थे. दे वर द गुड्स विच वर प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर वर मेंट ओनली फॉर द रिच सेक्शंस और दोज हु हैव द मीन्स टू बाय, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर को तो प्रॉफिट अर्न करना था, तो उन्हीं के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर पाती या कर रही थी जो उनको खरीद सकते थे. तो मेनली हम कह सकते हैं कि रिच सेक्शन को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, लेकिन पुअर सेक्शन के लिए कुछ काम या फिर कोई बेनिफिट्स जो थे प्राइवेटाइजेशन जो एक्टिविटीज़ थी वो नहीं लेके आई. So these were the demerits of privatization. The next element is globalization. Globalization, as the term suggests, globalization means around the globe. It is the process of integrating or interlinking the markets of different countries for trade and investments. Okay, so globalization, which was indicating the process of moving around the globe. Now, in economics, we are studying about the trade and investments, India's trade and investment states, or the situation or state of India's trade and investment. So, globalization here indicates that India's trade and investments around the world. What was the situation or the state of India's trade and investments around the globe? So, globalization is the process which were promoting the trade and investment activities around the globe. So you can say globalization can be defined as the activities or the process which were promoting the ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ अराउंड द ग्लोब. ओके, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस के रूप में डिफाइन की जा सकती है जो किसी भी कंट्री की ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को अराउंड द ग्लोब प्रमोट करती हो. ओके, सेम इज द डेफिनेशन इज saying the process of integrating or interlinking the markets of different countries for trade and investments, means different countries की markets को एक साथ जोड़ना trade और investment purposes के लिए. Okay, globalization does not limited to the trade purposes only. ये investments को भी अपने अंदर include करता है, foreign investments को. You can say FDI and FII भी इसके parts हैं. Here is a term we have to consider, that is liberalization, which we have already discussed, of removing or reducing the control of trade barriers, and the privatization which we had discussed now, increasing the role of private sector. Both these elements pave the way of globalization or to globalization. That means liberalization process के through जिसने कि trade barriers को हटा दिया था. ओके, ट्रेड बैरियर्स को हटा के या ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करके ट्रेड को फ्री बनाया, फ्री ट्रेड को प्रमोट किया लिबरलाइजेशन ने. एंड प्राइवेटाइजेशन जिसने कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को इम्प्रूव या इंक्रीज किया या प्रमोट किया. दोनों ही एलिमेंट्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन जो था सक्सेसफुल हुआ या ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया. क्योंकि जब तक किसी भी कंट्री में ट्रेड बैरियर्स होंगे, कोई भी एमएनसी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कोई भी दूसरी कंट्री की कंपनी जो है उस कंट्री में अपनी यूनिट सेटअप नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं. तो रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में कोई भी या रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में कोई भी एंटरप्राइजेस अपनी यूनिट सेटअप नहीं करना चाहेगी या फिर ऑपरेट नहीं करना चाहेगी. जब लिबरलाइजेशन आया, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए, तब एमएनसी स्टार्टेड कमिंग अप इनटू द मार्केट. सेम एज प्राइवेटाइजेशन, जब तक पब्लिक सेक्टर था, मींस गवर्नमेंट का रोल था, तो कोई एमएनसी या प्राइवेट सेक्टर का रोल लिमिटेड था, तो एमएनसीज वहाँ पे नहीं आ सकती थी क्योंकि उनको लाइसेंस लेना था. ओके, दैट्स वाई प्राइवेटाइजेशन जब आया, जब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से लाइसेंसिंग पॉलिसीज हटा दी गई या फिर प्राइवेट सेक्टर को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया, तभी एमएनसीज मार्केट में आनी स्टार्ट हुई. दैट्स वाई वी कैन से लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जो थी एक फाउंडेशन स्टोन थी, दोनों ही एलिमेंट्स ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के लिए. द पॉलिसी स्ट्रेटजीज प्रोमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, वो कौन सी पॉलिसीज थी जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को प्रमोशन मिला इकोनॉमी में? द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन द इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. जैसे कि हमने कहा लिबरलाइजेशन प्रोसेस जिसमें कि बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स जो थे, जिनमें हम टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को इंक्लूड करते हैं, तो उन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को, टैरिफ बैरियर्स जो कि टैक्स बैरियर्स थे, एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स जो अदर क्वांटिटेटिव बैरियर्स थे, उनको हटा दिया गया. अलोंग विद दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रमोट किया गया, जो कि एफडीआई एंड एफआईआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों को इंक्रीज किया गया. मीन्स some industries or some areas like near about 47 industries were there in which up to 100%, from 51 to 100%
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वॉज अलाउड। मीन्स कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी बहुत सारी जिनमें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को जो था अप्रूवल मिला। लगभग 47 जो हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज थी जिनमें कि इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट को 51 से 100% तक कर दिया गया था। मीन्स कोई भी एमएनसी यहाँ पे 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है। मतलब 100% इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अपनी खुद की यूनिट सेटअप कर सकती है, और 100% से कम है तो ऑब्वियसली वो पार्टनरशिप में आएगी। FEMA and FERA, the two terms FEMA and FERA. FEMA, which means Foreign Exchange Management Act. Okay. Foreign Exchange Management Act. FEMA replaced FERA, where FERA was Forex, or you can say Foreign Exchange Regulation Act. Okay, both these act. Only one term differentiates with each other, that is management and regulation. Okay. In FEMA, foreign exchange was managed. In FERA, foreign exchange was regulated. That means foreign currency. Foreign exchange here means foreign currency. In FEMA, or Foreign Exchange Management Act, the government framed or formulated such policies which were directing to increase the foreign currency or supply of foreign currency in the economy. Whereas in FERA, the policies which were framed under FERA directs the control of foreign currency or the supply of foreign currency in the economy. मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर जो पॉलिसीज बनाई गई वो ऐसी थी जो फॉरेन करेंसीज की सप्लाई को हमारी कंट्री में इंक्रीज करती थी। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट was the act in which or under which such policies were framed or formulated which promotes the supply of foreign currency in the economy, whereas FERA was the policies or the framework of the policies which regulates the supply of foreign currency in the economy. दोनों में difference है कि FEMA जहाँ पे foreign currencies की supply को promote करती है, that means through investments and exports, दोनों ही चीज़ों के थ्रू जो है सप्लाई इंक्रीज होती है, इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स के थ्रू फॉरेन करेंसी की सप्लाई हमारी कंट्री में होती है। तो फेमा ऐसी पॉलिसीज़ बनाती थी जिससे कि फॉरेन करेंसीज की सप्लाई इंक्रीज हो इकोनॉमी में, जबकि फेरा क्या था, ये फॉरेन करेंसीज की सप्लाई को रेगुलेट करती थी, कंट्रोल करती थी। दैट मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट्स तो काफ़ी लिमिटेड थे ही हमारे 1990 तक, बट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थी उनके ऊपर भी लिमिट रखी हुई थी, कंट्रोल्स लगाए हुए थे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, डोमेस्टिक ऑन्टरप्रेन्योर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड थी। ओके, सो 1991 में फेरा को रिप्लेस करके जो है फेमा एस्टैब्लिश किया गया, जो कि फॉरेन करेंसी की सप्लाई को इंक्रीज करता था। The next one is partial convertibility was allowed. Partial convertibility means when the government allows the conversion of domestic currency into foreign currency or foreign exchange at the current market price, okay, up to a certain limit. पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी जो था एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने की, मार्केट रेट पे कन्वर्ट करने की जो है परमिशन दे देती। दैट मीन्स गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। जो भी सेंटर्स होते हैं लाइक बैंक्स हैं या कुछ अदर सेंटर्स हैं लाइक एयरपोर्ट्स पे हम एक्सचेंज करा सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्लेसेस या सेंटर्स जिनको परमिशन है या फिर जहाँ पे फॉरेन करेंसी कन्वर्ट की जाती है, तो डोमेस्टिक करेंसीज को उनमें कन्वर्ट, फॉरेन करेंसीज में कन्वर्ट करने की अप्रूवल या परमिशन दे दी गई थी। दैट मीन्स गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था वहाँ पे, गवर्नमेंट से अप्रूवल या परमिशन की ज़रूरत नहीं है हर बार। ओके, लेकिन ये सर्टेन लिमिट तक पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट तक ही ये अलाउड होता है। जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड में हमें लाइक मिलियंस बिलियंस जो है फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो जब
उस सर्टेन लिमिट जो भी गवर्नमेंट ने डिफाइन की हुई है, कंट्री टू कंट्री ये वेरी करती है, तो उस लिमिट से ज़्यादा अगर कन्वर्ट करने की ज़रूरत है तब ही गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है। दैट्स वाई इट इज़ पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, मीन्स गवर्नमेंट ने फुल फ्रीडम नहीं दी, लेकिन कुछ हद तक जो है, सर्टेन एक्सटेंट तक जो है फॉरेन करेंसी में विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन कन्वर्ट कराया जा सकता है। जिस वजह से क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट्स थी, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स जो थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुई। मींस गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ख़त्म हो गया था कि हर बार गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, जब मर्जी चाहे कन्वर्ट कराया जा सकता है करंट रेट में, जिससे कि ट्रेड को प्रमोशन मिला। ऐसा अगर गवर्नमेंट की हर बार अप्रूवल लेनी होती तो लेंदी प्रोसेस हो जाती, इस वजह से ट्रेड कंट्रोल्ड था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अलाउड कर दिया है, जिस वजह से ट्रेड इंक्रीज या प्रमोट हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की हेल्प से। तो एक्सपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हुए। द नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने जो ग्लोबलाइजेशन के अंडर पॉलिसीज बनाई, और वट एवर द पॉलिसी फ्रेमवर्क्स मेड बाय द गवर्नमेंट अंडर ग्लोबलाइजेशन वर मेड फॉर a longer duration. That means it was not so that the government had to frame or formulate all the policies every year. बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी जिनको गवर्नमेंट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बना रही थी, एंड दैट वाज द टेन्योर वाज मेनली अप टू 5 years, कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज बना रही थी, तो गवर्नमेंट को बार बार जो है उन पॉलिसीज में चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। इसका फ़ायदा ऑन्टरप्रेन्योर्स या कंपनीज को मिला कि वो पॉलिसीज जो एक बार बना ली गई, वो अपनी एंटरप्राइजेस को या पॉलिसीज़ को, इंटरप्राइजेज अपनी पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेती, और फिर उनको ये पॉलिसीज़ बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म के लिए बनाई है। इस वजह से भी फॉरेन ट्रेड को प्रमोशन मिला या हेल्प मिली, असिस्ट, यू कैन से असिस्टिंग पॉलिसीज थी, एक तरीके से असिस्टिंग एलिमेंट था कि एंटरप्राइजेस को अपनी पॉलिसीज बार बार गवर्नमेंट की वजह से चेंज नहीं करनी पड़ती थी। ये 5 साल की इसलिए थी क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का टेन्योर भी जो है मैक्सिमम 5 years है, तो अगर एक गवर्नमेंट पॉलिसी बना दे तो मे बी दूसरी गवर्नमेंट उसको चेंज करना चाहे, इसलिए इसको सिर्फ कन्फाइंड रखा गया 5 साल तक ही। The next one is reduction in tariffs. Tariffs are the mainly tax barriers which were imposed by the government on imports and exports or foreign trade, you can say. Mainly imports को restrict करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाए हुए थे, हैवी टैक्सेस, इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाई हुई थी, एंड इन बैरियर्स को अब हटा लिया गया है, जिस वजह से जो इम्पोर्ट्स थे वो इंक्रीज हुए, एंड यू कैन से द गवर्नमेंट स्टार्टेड एक्सपोजिंग आवर इकोनॉमी to the global economies. Withdrawal of quota restrictions. Apart from these import duties or taxes which were levied on import, हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़, ये टैरिफ बैरियर्स है, टैक्स बैरियर्स थे। अपार्ट फ्रॉम सच टैक्स बैरियर्स कुछ क्वांटिटेटिव बैरियर्स भी लगाए हुए थे, जो कि कोटा बैरियर्स के नाम से थे, जो हम पहले भी पढ़े हैं। इम्पोर्ट कोटा मीन्स इम्पोर्ट की लिमिट से, इम्पोर्ट जो गुड्स हम इम्पोर्ट करते थे उनकी क्वांटिटी की लिमिट फिक्स थी, उस क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं की जा सकती, तो दैट मीन्स वो क्वांटिटेटिव बैरियर्स थे कि क्वांटिटी की लिमिट फिक्स कर दी गई थी। ओके, नाउ सच लिमिट्स और बैरियर्स हैज़ बीन लिफ्टेड अप, वो हटा दिए गए हैं, तो दैट मीन्स इम्पोर्ट्स इंक्रीज हुए इकोनॉमी में। द नेक्स्ट टर्म वी हैव टू डिस्कस इज WTO। जैसे कि हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, तो ग्लोबलाइजेशन के कंसर्न में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि जब डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं तो एक कंसर्न अराइज होता है कि वेदर द ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज फेयर और नॉट, और व्हाट पॉलिसीज और डायरेक्शन शुड बी देयर विच प्रमोट द ट्रेड बिटवीन कंट्रीज एज फेयरर। ओके, सो WTO एक एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टैब्लिश हुआ 1995 में, जनवरी 1 में एग्जिस्टेंस में आया। हालांकि WTO से पहले GATT हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में होने वाले ट्रेड को रेगुलेट करता था। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड या ग्लोबल ट्रेड जो था इंक्रीज़ हुआ, उसकी डायमेंशंस इंक्रीज़ हुई, तो हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी जो पॉलिसीज़ बनाए और डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में होने वाले ट्रेड को जो है असिस्ट करे, डिफरेंट कंट्रीज़ को डायरेक्शंस इशू करे रिगार्डिंग ग्लोबल ट्रेड, और ये अश्योर करे या इंश्योर करे कि कंट्रीज़ के बीच में अनफेयर ट्रेड नहीं हो रहा है, फ्री एंड फेयर ट्रेड हो रहा है। सो WTO वॉज एस्टैब्लिश टू प्रमोट द फ्री एंड फेयर ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, वो जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स थे उनको हटाते हुए। Now some points are to be considered that how India get benefited uh, through WTO. हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे
एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़ हमने बनाई है डब्ल्यूटीओ की हेल्प से, जिससे कि हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स जो थी इंक्रीज़ हुई या हमारी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हुई। फॉर एग्जांपल जो मल्टी फाइबर एग्रीमेंट था, जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का एक्सपोर्ट जो था काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। ये हम कुछ एलिमेंट्स पर सॉरी एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिससे एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज़ हुए थे। जैसे मल्टी फाइबर एग्रीमेंट था, हालांकि ये एसएसटी में भी हमने पढ़ा है। जो मल्टी फाइबर एग्रीमेंट था जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में हुआ डब्ल्यूटीओ के इंटरवेंशन के साथ, तो वहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी उनमें हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुए। The next term, agreed reduction, and that reduction was in trade barriers which were put by the government, or you can say these were the barriers which came into existence with the subsidies which were given by the developed countries to their agricultural industries or agro products on their agro products। means developed countries जो थी उन्होंने अपने agricultural products को बहुत ज़्यादा subsidies दे रखी थी, जिसकी वजह से उनके जो, हालांकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी तो उनके पास उनकी जो टेक्नोलॉजी थी काफ़ी एडवांस थी, तो जो एग्रीकल्चरल आउटपुट्स वो प्रोड्यूस करती थी उनकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती थी और क्वालिटी भी अच्छी होती थी। और वो बहुत सारी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, एलडीसीज थी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, उनमें अपने प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती थी। हालांकि गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही थी तो वो बहुत कम प्राइसेस में अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज़ में बेच पाते थे। एंड द एलडीसीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ वर नॉट एबल टू कम्पीट देयर प्रोडक्ट्स इन द ग्लोबल मार्केट। जो एलडीसीज थी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस नहीं थी, तो उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो ग्लोबल मार्केट में उन डेवलप्ड कंट्रीज़ के एग्रो प्रोडक्ट्स को कम्पीट नहीं कर पाते थे। एक तो क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी थी उनके, और ऊपर से सब्सिडाइज्ड होने की वजह से उनके प्राइसेस भी काफ़ी कम थे। तो जो एलडीसीज थी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे शुड abolish their subsidies on their agricultural products or their agricultural industries so that the LDCs can compete on the grounds of prices, कि जो LDCs हैं उनके प्रोडक्ट्स जो हैं compete कर सकें या उनको भी एक ग्लोबल मार्केट का शेयर मिले ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्राइसेस, जो कि काफ़ी कम पे डेवलप्ड कंट्रीज़ बेच रही थी। तो एग्रीड रिडक्शन एक ऐसा पॉलिसी था जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा दी जाने वाली जो सब्सिडीज थी टू देयर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज दैट हैज़ बीन एबोलिश्ड और reduced। Uh, Here are the negative points which were being observed by the experience of the working of WTO. These were known as the asymmetric treatment, or you can say that the policies which were adopted or formulated by WTO, they were not uniform in each area or each sector. How did it happen? Some points are there. Say the first is saying the WTO advocates free movement of capital goods across the country। WTO की जो पॉलिसीज़ थी उनमें ये डिफाइन किया गया था कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच जो कैपिटल गुड्स हैं, मेनली जो मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका फ्री मूवमेंट होगा। दैट मीन्स सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ ही जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है उनका बेनिफिट नहीं लेंगी। द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कैन ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द हायर टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी। But on the other side, the labor force was not given the free movement, or the labor force market was not given the priority of free movement as compared to the capital goods. It was argued that both the commodities, or both the factors, you can say capital and labor, these are the factors of production, both are the integral part of the factor market। So why didn't they given the equal opportunities of free movement? Means जब कैपिटल गुड्स को फ्री मूवमेंट मिली डिफरेंट कंट्रीज़ की मार्केट्स के बीच में, तो लेबर फोर्सेस के ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए गए, लेबर्स को जो है क्यों फ्री मूवमेंट नहीं दिया गया। हालांकि धीरे धीरे ये जो है फ्री मूवमेंट एग्जिस्टेंस में आया है, जैसे कि आज के टाइम में हम बीपीओ पढ़ते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें कि लेबर फोर्स का आउटसोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो रहा है। लेकिन 1991 के बाद से
या फिर डब्ल्यूटीओ के एग्जिस्टेंस के बाद से जो पॉलिसीज़ फ्रेम हुई, तो हम कह सकते हैं उनमें कैपिटल गुड्स को तो इम्पोर्टेंस दी गई, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट तो हुआ, लेकिन जो लेबर फोर्स था उसका ज़्यादा जो फ्री मूवमेंट था उसकी उसको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं फ्रेम की गई जिसमें कि ये बताया जा रहा हो या फिर ये डायरेक्शंस हो कि जो लेबर फोर्स है वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री ईजिली मूव कर सकती है। ओके, इसका बेनिफिट या फिर जो हम कह सकते हैं बेनिफिट सिर्फ जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्हीं को हुआ, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज के पास कैपिटल गुड्स काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंट क्वांटिटी में थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस थी, टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रही थी, तो एक्सपोर्ट कर सकती थी उन गुड्स को। ओके, और कर रही थी, दैट्स वाई दे ओनली गेट द बेनिफिट्स और दे ओनली गेट बेनिफिटेड। बट जो एलडीसीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनके पास कैपिटल गुड्स तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज एलडीसी या अंडर डेवलप्ड उस टाइम पे, जिनके पास लेबर फोर्स काफ़ी अबेंडेंट क्वांटिटी में थी, अगर लेबर फोर्स को फ्री मूवमेंट मिला होता तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो ख़त्म होती, एंड जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी इंक्रीज़ होता थ्रू रेमिटेंसेस, क्योंकि हमारी लेबर फोर्स जो है अगर एक्सपोर्ट होती, दैट मीन्स दूसरी कंट्रीज़ में जाती काम करने के लिए, तो वहाँ पे अर्न करके अपनी कंट्री में अपनी फैमिली को रेमिटेंसेस करती, मीन्स वहाँ की अर्निंग को यहाँ पे भेजती, अपनी इनकम को भेजती यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई भी इंक्रीज़ होती और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी कुछ हद तक जो है दूर की जा सकती थी। सो वी कैन से दैट जो डब्ल्यूटीओ की पॉलिसीज थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट the appraisal or analysis of these policy in our next lecture.